बिलावल भुट्टो सरदारी इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। Neither detached nor formulated in a vacuum. It is inextricably linked to the domestic conditions and prevailing external conditions, the internal social, political, and economic conditions, the imperatives of geography, the burdens of history, and current regional and global political and economic landscapes. All have a bearing on what can possibly be done and how it can be done in the foreign policy arena. However, the goal of dynamic management of a country's foreign policy must remain a constant in any given situation, i.e., it must continue to aspire to meet the people's hopes and expectations. When I assumed the position of the Foreign Minister of Pakistan slightly over a year ago, Pakistan's foreign policy was under serious stress, compounded significantly by domestic political turmoil and a dire economic outlook. Our commitment to the China-Pakistan economic corridor was being questioned. Our relations with the United States were at an all-time low. Our traditional partnership with Gulf countries at a suboptimal level. Uncertainty loomed over the GSP Plus and future trajectory of relations with Europe. We were in the FATF grey list, and the trust deficit with the IMF was at an all-time high. All this was in addition to persistent foreign policy challenges on our eastern and western borders and a renewed threat of terrorism. Before we could settle, Pakistan was rocked by climate-induced catastrophe, floods requiring a robust international response to meet the urgent domestic needs. I do not claim that we have encountered every challenge successfully, but I must share with you that I today feel we have achieved more than what I thought we would have achieved when I first started my tenure as Foreign Minister. We have just celebrated the 10th anniversary of the China-Pakistan Economic Corridor in Islamabad, with the Chinese Vice Premier in attendance. The help and assistance our government has received from China, politically, economically, gives me confidence about the health of Pakistan's relationship with its iron brother. Three senior official level delegations from the United States visited Pakistan in the second half of July 2023, from the Treasury Department, the NSC, and one from the private sector. The last 1 year saw consistently high-level engagement with the United States government, and I'm glad that we now have a path with the US to rebuild and strengthen bilateral relations. What gives me satisfaction, however, is that the positive trajectory in our relations with both the United States and China have been pursued with clarity, underpinned by our consistent position that we do not want to be dragged into global competition. Also, I draw particular satisfaction on how Pakistan maintained its principled position on Ukraine, despite all the doubts and apprehensions in the media. Our voting pattern on related resolutions in multilateral fora remained unchanged. We invested significant effort in engaging both sides of the divide, and today I believe there is a greater understanding of Pakistan's position. This is clearly evidenced by our closer engagement with the US and the European Union, burgeoning energy cooperation with Russia, and visits to Pakistan by the Foreign Minister of Belarus and the Ukraine. This broad, deep, and meaningful engagement with all countries also helped building trust with the countries that sit on the IMF board. Its coming to fruition last month was a gratifying moment. It was owed in equal amount to the assistance given to Pakistan
by China, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, a sign that our traditional partners are standing firm with us. I am happy that we were able to contribute to this national effort led by the Prime Minister, Mr. Shehbaz Sharif. Exiting the FATF grey list, was an important development for Pakistan. And I must remind you कि हमने ना सिर्फ FATF grey list से निकले, हमने 2 action plans मुकम्मल किए, वक्त से पहले मुकम्मल किए और वक्त से पहले grey list से निकले. The Minister of State, Ms. Hina Rabbani Khar, led this effort as the chairperson of the National FATF Coordination Committee. And जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ हिना रबानी खर साहिबा ने ना सिर्फ ये काम करवाया मगर ज़्यादा शोशा के साथ ने, यही वजह है कि हम FATF की जो ग्रे लिस्ट थे उससे निकल सकें. In this regard, years of technical work in progress by all national states, इसलिए कि हिना ने ये लिखा भी है मेरे लिए, तो अब मैं सबको तारीफ करूँगा, मगर सबसे ज़्यादा मेहनत जो है behind the scenes इसके हिना रबानी खर साहिबा की थी. In this regard, years of technical work in progress by all national stakeholders needed to be recognized internationally. We were able to project our progress successfully and have it duly recognized by the FATF, thwarting diplomatically the designs of major detractors. Instead of celebrating this success, we remained focused on the job. We also led a legislative process to ensure that our gains at the FATF are consolidated. Engaging Europe and the United Kingdom constructively was a priority for us. Countless meetings and bilateral visits to and from Europe, as well as on the sidelines of multilateral meetings, have reinvigorated our ties. We seek from these countries better access for our goods, visa facilitations, especially for students, work opportunities for our skilled people, and cooperation in the education, science, and technology. We draw particular satisfaction from the recently initiated migration and mobility dialogue with the European Union, which has great potential for opening doors for Pakistanis seeking employment abroad. इस पे हमने बहुत फोकस किया, ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ मगर जगह जगह कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं, बैरून मुल्क उनके लिए किस तरीके से हम अपना शेयर में इजाफा कर सकते हैं, और इसमें भी हिना रबानी खर साहिबा की बहुत मेहनत है. The continuation of the GSP Plus facility is another positive development. There is immense potential in our constructive partnership with this region, and we believe we have set the tone and corrected the course. Successive governments need to continue working in the same direction. On Afghanistan, our approach has been quite clear and forthwith. We will do everything we can for our brothers and sisters, the people of Afghanistan. We have maintained a robust practical engagement with the Afghan interim government, working on areas such as security, border control and markets, commerce, health, education, transit trade, and almost every facet of bilateral cooperation. Pakistan's peace and security are, however, non-negotiable. My first responsibility is to my people, the people of Pakistan. We continue to engage proactively and constructively at every possible regional international format aimed at promoting peace, security, and stability of Afghanistan. Once again, I want to emphasize the skies is the limit to the opportunities we can create together, but terrorism must be countered. Throughout this furvish and extensive diplomatic push, we never compromise on a core tenet of our foreign policy, Kashmir. Even as I participated at the SCO Foreign Ministers meeting in Goa this year, it was our responsibility, while we never once abused the platform of the SCO,
to further our partisan agendas. In media interactions and from Indian soil, we managed to advocate for the cause of the oppressed people of Kashmir. And in the same spirit, whether it was at the General Assembly at the United Nations, whether it was at the OIC, whether it was the visit of the Secretary General of the OIC to Azad Kashmir, the dissemination of dossiers to the international community on continued Indian brutality on Muslims in Indian-occupied Jammu and Kashmir. Advocacy for the Kashmir cause has been a consistent component of our foreign policy. As foreign minister of the Islamic Republic of Pakistan, and also as the last chairman of the OIC Council of Foreign Ministers, I take pride in taking the lead on countering Islamophobia and acts of desecration of the Holy Quran. As chair of the OIC group at the Human Rights Council in Geneva, see, ये तो Geneva पे पहुंच गए, इससे पहले तो हमने काफ़ी कुछ किया था, मैं आपको याद दिलवाता हूँ। एक तो OIC की प्लेटफॉर्म से जब हम काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के सरबराह थे, तो हमने उस प्लेटफॉर्म से, उनके अपने CFM के प्लेटफॉर्म से तो ऑब्वियसली इस चीज़ को कंडेम किया, मगर साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके जो 15 मार्च इस्लामोफोबिया का इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर तो हो चुका था, मगर उसकी कोई मनाने के तरीक़ेकार नहीं था, तो हमने तारीख़ रकम किया और OIC का प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये दिन मनाया। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल को साथ बिठाया, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है उसको साथ बिठाया, पूरी दुनिया को सामने जो है जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली के जो फ्लोर है वो सब मौजूद है। हर मुल्क ने अपने बात की और यूनानिमसली ना सिर्फ इस्लामोफोबिया को कंडेम किया, मगर हमारे साथ OIC के साथ द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मनाया गया। ये तारीख़ी बात तो था, मगर अफसोस के साथ जो इंसिडेंट्स है इस्लामोफोबिया के, जो इंसिडेंट्स थे for the desecration of the Holy Quran in some countries in Europe, वो होता रहा। तो फिर उसके बाद हमने जो इधर लिखा है, एक और तारीख़ी जो कदम था जो पहली बार हुआ था कि OIC का नुमाइंदगी करते हुए हमने यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनीवा में, we tabled and got successfully adopted the resolution on countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence। और ये भी एक बड़ा तारीख़ी अचीवमेंट है इस लिहाज से कि आपका मौक़िफ़ को, मुस्लिम उम्मा का मौक़िफ़ को जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो आपके मौक़िफ़ को माना है और आपका रेजोल्यूशन वहाँ से पास कर चुका है। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था। आई हैव ओनली मेंशन्ड some key areas of our policy, and I'm glad that while difficult issues tend to get urgent attention, our focus on them did not come at the cost of our multifaceted ties with some of our more important partners. Saudi Arabia, the UAE, Turkey, Iran, Qatar, Azerbaijan, or at the cost of our multifaceted ties with countries in Africa, Southeast Asia, Latin America, or the Far East. In fact, we were able to add to these relationships substantially. Leadership positions in multilateral processes and forums are coveted globally because they often reflect prestige, respect, and the health of a country's diplomacy. In addition to successfully completing our leadership at the OIC Council of Foreign Ministers, last year Pakistan was elected as chair of the Group of 77 in China, leading the voice of the Global South in the international discourse on developmental issues and आपको याद होगा climate change, United Nations Economic and Social Council ECOSOC,
UN Committee on Non-Governmental Organizations, UN Committee for Program and Coordination, the Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commission, and Pakistan also successfully contested the election for the post of Assistant Secretary General for Science and Technology in the Organization of Islamic Cooperation. This is all a reflection of Pakistan's standing, not only in the Islamic world for the OIC, but at international fora. And it's a great credit, a great compliment to Pakistan's diplomats and our foreign service that despite हमारा जो वसाइल है वो कम होंगे, लेकिन हमारा जो एम्बेसडर्स हैं, हमारा जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, उनकी मेहनत की वजह से कम वसाइल के बावजूद हम इतने सारे जो ओहदे हैं हमने पाकिस्तान के लिए हासिल किए हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन अहम जगह में हमने यकीनी बनाया. Since we assumed office, I've worked to ensure that we are constantly evolving and improving to stay ahead of the times in times of multi-dimensional transition. I realize that reforms within the ministry will... Okay, before I start on reforms पे मैं तुम्हें आ जाऊंगा, लेकिन एक बात जो मेरे ख्याल में हमसे मिस हुआ इसमें, if I'm not wrong, वो जो climate advocacy का मौका हमें मिला foreign office के platform से और आपका वज़ीर ख़ारजा होते हुए, मैं आपको बताऊं कि जितना उन दिनों में तकरीबन 1 साल पहले जब ये सैलाब हो रहा था और हम तो ग्राउंड पे मौजूद थे, अपने आंखों से ये सब कुछ देख रहा था, मैं कभी अपनी ज़िंदगी भी उतना बेबस महसूस नहीं कर रहा था अपने आप को जब मैंने उतना तबाही देखा. मैं सोचता था कि पाकिस्तान जिनका वसाइल हमारा इतना कम है, इतना चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो, हम कैसे इस मुश्किल वक्त से आगे बढ़ेंगे. मगर उन्हीं दिनों में हमने फौरन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को ना सिर्फ ऑब्वियसली दावत तो दिया, मगर यहाँ पाकिस्तान लेकर आए, पाकिस्तान में उसको सैलाब मुतासरीन के पास लेके गए ताकि पूरी दुनिया को नज़र आए कि हम किस किस्म का कुदरती आफत से गुजर रहे हैं. पर उसके फ़ौरन बाद जो हम यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के साथ यूनाइटेड नेशंस में चले गए, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने अपना जो यूएन जनरल असेंबली का टाइम था, पूरा क्लाइमेट में उसने उसको तब्दील कर दिया था और बेसिकली यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के हवाला कर दिया था. उसने हमारे लिए उसका ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ा सा एक शोकेस रखा था जहाँ तस्वीरें थे, डॉक्यूमेंट्री फुटेजेस थे. अपना यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का सेशन था, वो सेशन में आप किसी का तकरीर भी सुन ले, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का तकरीर तो अपनी जगह उनका भी बहुत शुक्रगुजार है, मगर इसलिए कि उसने इतना लीड लिया और उतना हमारा इशू को उनका अपना इशू बना दिया था. तो पूरा यूनाइटेड नेशंस, मैं अभी शायद उन दिनों में जब 9/11 के फ़ौरन बाद तब पाकिस्तान उतना फोकस में था, और फिर उसके बाद आपके ये सैलाब क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी के दौरान हर मुल्क ने ना सिर्फ आपका जिक्र किया मगर आपको मदद फराहम किया, आपको ना सिर्फ रिलीफ का सपोर्ट दिलवाए थे, और उन दिनों में भी नज़र आ रहा था कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरी दुनिया पाकिस्तान को मदद कर रहा है. वहाँ से हमने COP27 पे गए थे. COP27 पे हमारा खुशकिस्मती था कि पाकिस्तान साथ ये G77 प्लस चाइना का सरबराही संभाल रहा था उस वक्त, जो ग्लोबल साउथ का एक ग्रुप था. तो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने लॉस एंड डैमेजेस का एडवोकेसी भी की, और COP27 में भी हमने तारीख रकम किया कि लॉस एंड डैमेज को क्लाइमेट एजेंडा पे डाला. उसके बाद हमने जो जिनेवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान के नाम से फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक तो वो अनप्रेसिडेंटेड था. तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी के बाद आपको एक क्लाइमेट रेजिलिएंट के नाम पे एक डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ. जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे कि पाकिस्तान को बड़ा धचका मिला था फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से पिछले 4 साल,
اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ مصروف ہے، اپنے مسائل میں لگے ہوئے ہیں سب، یا یوکرین سوچ رہے ہیں، سارے وسائل بھی ادھر جا رہے ہیں، تو شاید پاکستان کو اور اس ٹاپک پہ وہ سپورٹ نہیں ملے گا. مگر شکر الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے ڈپلومیٹس کی محنت کی وجہ سے ہم نے نہ صرف اپنا ایکسپیکٹیشنز سے زیادہ پلیجز وصول کیے، مگر پورا دنیا کو بتا دیا تھا، اور ایک منہ توڑ جواب تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور ان دنوں میں جب دنیا تو پولرائز ہوگا، پارٹیزان ہوگا، ایک دوسرے کے شکل تو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، مگر پاکستان کا اس کوز میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. جو پاکستان کے مخالف ہیں اور پاکستان کے لیے برا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. اور پاکستان کے عوام کے لیے، ہم سب کے لیے اتنا ایک حوصلہ دلوانے والے وقت تھا کہ اصل میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اور ہمارا مشکل وقت میں عالمی اداروں نے، ہمارے دوست ممالک نے، ہمارا ٹریڈیشنل پارٹنرز نے سرپرائزنگ جگہ سے، جہاں ہمیں امید نہیں تھا کہ اتنا مدد کا پلیج کیا جائے گا، انہوں نے ہمیں آپ کے سکسیسفل ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ کو مدد فراہم کی، اعلان کیا. اور آج میں واپس آ رہا ہوں گھوٹکی سے، جو سندھ کا ایک قبائلی ڈسٹرکٹ ہے، بڑا ٹریڈیشنل ٹرائبل ایریا ہے. اور ہم نے اسی پروگرام کے تحت ہم عورتوں کو اپنے زمین کا مالک بنا رہے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بنا رہے ہیں. ان کے لیے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بھی، تاکہ اگلی بار جب سیلاب آئے ان کو اتنا نقصان نہ ہو، وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں. لیکن جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہا تھا کہ جو لوگ اپنی پوری زندگی کیا نسلوں تک یہ خواب بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا یا اپنا زمین کا مالک بنیں گے، وہ اب اپنے زمین کا بھی اور اپنا گھر کے مالک بھی ہے. تو ہم نے نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کیا ہے، نہ صرف فلڈ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ بنایا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ بھی کروایا ہے، ہم نے غربت کا مقابلہ کیا ہے. اینڈ دس از دا سنگل لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر ان اے جنریشن. انشاءاللہ تعالیٰ میں 2 ملین گھر بنا کے دوں گا. 2 ملین families will benefit from this initiative, and it's only possible because of the support of the Foreign Office of Pakistan, international financial institutions. ہمارا جنیوا، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو 2020 میں بھی ایک سیلاب تھا، اور اس وقت ہم تو بالکل ہی لاوارث تھے. دنیا تو دور کی بات ہے، وفاق بھی ہمارے طرف نہیں دیکھ رہے تھے. تو 2020 کے سیلاب میں میں نہ پیسہ دلوا سکا، نہ ریلیف دلوا سکا. اور اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں، مگر اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ آپ سب ہمارے ساتھ تھے، یہ ادارہ ہمارے ساتھ تھا، اور ہم نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کیا ہے. ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے. میرے پاس زیادہ انفارمیشن ہے سندھ کے بارے میں، مگر مسئلے تو جگہ جگہ ہیں. ابھی تو ہم گھر بنا رہے ہیں، مگر ہمارا 50% جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا ہے، یا وہ بالکل 100% گر چکے ہیں، یا وہ اب وہ قابل نہیں ہے کہ ان میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں. ہم وزیر اعظم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمارے درخواست میں وہ اب سندھ حکومت کے ساتھ پارٹنر کر کے وہ تعلیمی ادارے بھی بنائیں گے. ہمارے سڑکیں بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اریگیشن نظام کو بھی نقصان پہنچا ہے، ایگریکلچر میں جو پہنچا تو سو پہنچا. مگر یہ جو گھروں کا سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا ہے، اپنی زمین اپنا مکان کا جو پروگرام ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک انقلاب لے کر آئے گا. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں چینج مینجمنٹ انیشیٹو، جو ہمارا ریفارمز کا انیشیٹو تھا فارن آفس کا. میرے خیال میں نے کافی آپ کو بریف کیا ہے اس پہ، مگر پھر بھی میں ایک بار پھر اس پہ بتاتا ہوں.
तो by being sort of cognizant of the facts कि हमें reform लेकर आना था और foreign office को modern दुनिया में पुश करने की कोशिश करना का सोच था, और ख़ास तौर पे इसलिए कि हम एक नौजवान वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उम्मीद भी यही था कि कुछ नए रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे. तो therefore under the overall vision of our change management initiative, we succeeded in implementing reform across diverse work streams and thematic frameworks of the ministry. The end state vision was to bring a paradigm shift in the way we conduct business and to transform this ministry into a modern institution that worked like a well-oiled machine, where antiqued procedures and internal inefficiencies were relics of the past. In total, we completed 51 reform initiatives, including through automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration and finance, as well as in the areas of communications and security, logistics, career development and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, the training facilities at the Foreign Service Academy. Foreign Service Academy का भी board जो है, वो पहली बार शायद 12 साल बाद हमने फॉरेन सर्विस एकेडमी का जो बोर्ड है वो भी होस्ट किया है, और ये आपका फॉरेन सर्विस एकेडमी का अल्हम्दुलिल्लाह रिफॉर्म भी हो रहा है. At my first interaction with my officers when I took over this office in April last year, and I spoke to them in a town hall meeting in this very room, I committed to support them in meeting their long-standing demands relating to the harmonization of their pay and allowances and cadre strength. And I'm happy to report that we delivered on all those commitments successfully. Cha wo foreign allowance ho, entertainment allowance, executive allowance, entertainment allowance, executive allowance ho, ya cadre strength ho. हमने और हम वज़ीर आज़म साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं. ये पॉइंट्स हमने अपने पहला कैबिनेट मीटिंग में उठाए थे, और पूरा 16 महीने जो है हम सब लड़ते रहे, और हम वज़ीर आज़म साहब के, इसाक़दार साहब के ख़ास तौर पे हम शुक्रगुजार हैं कि आखिरकार जो काम मोफा में 11-12 साल से नहीं हो सका हमारे हाथों से हो गया. मेरी उम्मीद है कि इसका फ़ायदा इस इदारा को होगा, और जो लोग इधर दिन रात मेहनत करते हैं उनका हक थे, उनको अपना हक हमने दिलवाए हैं. Also, given the centrality to MOFA's role in managing intergovernmental relations, we made sure that the ministry had a seat at a table in deliberating forums of successful issues of economy, trade and foreign investment, including more recently at the SIFC and the reconstituted board of the BOI. To ensure effective follow-up and coordination for the implementation of action points that emerged from my interactions during my official travels abroad, we developed an action matrix which contains the inventory of Pakistan's commitments to our bilateral and multilateral partners, organized thematically according to the tasks falling under respective ministries, provincial governments, and federal agencies. I've shared the compendium of the action matrix with the Prime Minister, and this comprehensive document will serve as an easy reference and a useful guide to track the status of implementation of Pakistan's pledges, progress, and lack thereof. This will also act as a valuable resource, particularly for our successes in ensuring business continuity for promotion of Pakistan's cooperation and partnership with the international community, and most importantly, will help restore confidence of our foreign investors and development partners globally. Moreover, under the Change Management Initiative, we are also implementing long overdue reforms to expand the mandate and scope of our existing camp offices, or camp offices का अब नाम तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला जल्द, आज रात ही, for Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta. So इसका सोच ये था कि 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे के पास तो ज़्यादा इख्तियार है, ज़्यादा काम है, मगर आपका जो कैंप ऑफिस है वह उनका इतना ज़्यादा ना इख्तियार है, ना स्कोप है, ना मैंडेट है, ना, तो इसलिए कि अब हमारा कार्डर स्ट्रेंथ में भी इजाफा हो गया है और बाकी रिफॉर्म्स भी आ गए हैं. हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा जिम्मेदारी अपने कैंप ऑफिस को दिलवाए, और वो बाकायदा हर सूबे में द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए एक आउटपोस्ट हो, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो
जो कैंप ऑफिस है, जो आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट है फॉर फॉरेन अफेयर्स इन द प्रोविंसेस, वो फिर सूबाई हुकूमत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करें। अगर वो वज़ीर आला किसी सूबा का या किसी वज़ीर बाहर जा रहा हो, उनको थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाए, उनको पता चले कि पाकिस्तान का क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या हमारा पोजीशन है। अगर वो अपने तौर पे किसी मुल्क के साथ या किसी मुल्क के सूबा के साथ कोई काम करना चाहे, तो बड़ा ज़रूरी था कि उनको फॉरेन ऑफिस का सपोर्ट मिला जाए। और साथ साथ सारे सूबे में जो है आपके काउंसिल जनरल्स मौजूद हैं, उनके साथ मेरा ख्याल में ज़रूरी था कि वहाँ हमारा फॉरेन ऑफिस का एक ऐसा आउटपोस्ट हो, डायरेक्ट उनके साथ वहाँ ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेट कर सके। इससे इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ आपको सूबाई हुकूमतों को फ़ायदा मिलेगा, मगर जो काम में हमारा बॉटल टैक्स हो जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट किसी वज़ीर ख़ारजा को बताया जाता है कि वो कोई काम पेशावर में करना चाह रहे हैं, जब तक यहाँ से लेके प्लानिंग के पास जाएगा, प्लानिंग से लेके फिर पता नहीं कब तक वहाँ सुबह पे पहुँचेगा, बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर डायरेक्टली वो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कैन सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो मेरा ख्याल में ये अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये इनिशिएटिव मोफा को भी फ़ायदा दिलवाएंगे और जो वो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी फ़ायदा दिलवाएंगे। Simultaneously, we are also extending consular services to the general public. The Honorable Prime Minister has been pleased to approve last week the establishment of the Ministry's new liaison offices in Gwadar, Sakhar, Jhelum, Gilgit-Baltistan, Multan and Muzaffarabad. A committee has been established to devise details, modalities to operationalize the newly established liaison offices in these cities at the earliest possibility, and this will ensure service delivery at the doorstep of the people. ये भी हमने समझा बहुत ज़रूरी है, बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप सखर से आपको इधर इस्लामाबाद आना पड़े, इवन कराची का कैंप ऑफिस पहुंचना पड़े, तो आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी हमारा मौजूदगी ज़रूरी था, साथ साथ जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान, तो ये भी इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा तो आवाम को काफ़ी सहूलत मिलेगा। I hope I can say without fear of contradiction that I am leaving a happier and more content foreign service than the one I found in April 2022. But before I conclude, I wish to share with you three fundamental approaches that underpinned our term as the Foreign Minister of Pakistan for the past year or so. Number one, professionalism over populism, with a firm belief that Pakistan and its people will benefit from a dispassionate and mature foreign policy. Facing challenges, we remained firm and humble when blessed with success. In diplomacy, the real gold seldom glitters, and history judges best. What lovely words you've written, Hina. Togetherness over egoism, with full confidence that best decisions and policy choices come as a result of collective wisdom of Pakistan's leadership, the Foreign Office professionals and relative stakeholders. This required us, the ministers, to not dictate, to not direct, but be directed by the logic put before us. Thus, every choice that we made or a policy we worked on was the result of a consultative process. 3, broad engagement over zero-sum games, with a hope that sincere engagement with all countries, clear articulation of Pakistan's policy and expectations, and an earnest desire to build cooperation with all countries will benefit Pakistan in the long run. This required sacrificing short-term boosts that can result from partnership and zero-sum games. We clearly prioritized long-term and stable gains in the foreign policy arena, even if their magnitude was not
optimal in current terms. I believe our three major successes resulted from these approaches. The effusive international response to the 2022 floods, which we also galvanized as chair of G77 towards the creation of the Loss and Damage Fund by COP 29 or 27, FATF delisting, and the renewal of the IMF plan. I thank you, and now I am available for your questions. Mumtaz, aapko. हाँ भाई, don't steal Mumtaz's thunder on my last. Assalamu alaikum ji. Naveed Siddiqui sahab. Okay, लेकिन आप you'll call on people, ना? जी, नवीद सिद्दीकी साहब सवाल पूछिए. बिलावल साहब, नवीद सिद्दीकी साहब, आप कौन से चैनल के साथ हो? टैलेंट न्यूज़ सर. ओके. अच्छा, मेरा क्वेश्चन, आपने काफ़ी कामयाबियाँ गिनवाई बिलावल साहब. कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे जो करीब तरीन हमारे पड़ोसी हैं, एक इंडिया है और एक अफ़गानिस्तान है. तो क्या समझते हैं कि 16 माह के दौरान क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो सकी कि इंडिया के साथ इंगेजमेंट और अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम तालिबान की गवर्नमेंट है उसकी रिकग्निशन के हवाले से ना पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ किया और ना ही कोई इंटरनेशनली कोई ऐसी मूवमेंट हुई? क्या वजूहत हैं इसमें? थैंक यू. मेरा ख्याल में आपका सवाल ये है कि जो 70 साल में नहीं हो सका अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ, आपने पिछले 16 महीने में वो क्यों नहीं किया? लेकिन हमने, जहाँ तक इंडिया की बात है, हम ना सिर्फ क्लियर रहे हैं मगर कंसिस्टेंट रहे हैं. कि अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है. जब तक भारत अपना इल्लीगल यूनिलैटरल एक्शन ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं मगर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स को भी वायलेट करते हैं, हमारे अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट करते हैं, जब तक भारत उस पर नज़रसानी नहीं करता है, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल स्पेस मौजूद नहीं कि हम एक मीनिंगफुल तरीके के साथ उनसे इंगेज करें. इसके बावजूद, इन कंडीशंस के बावजूद और हमारा पोजीशन के बावजूद, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मौके हो. मैं पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा था 12-11 साल बाद जो गोवा गया. इसके बावजूद कि हमारे एतराज़ात थे, इसके बावजूद कि मेरे सर की कीमत लगा हुआ था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़, हमारा हक था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखें और वो हक हमने पूरा करवाया. हाँ, वापस आके हमने भारत के साथ जो है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.